now we're gonna start with an introduction to Docker, and we're gonna learn what Docker actually is and why we always prefer to use Docker while we work in an environment where there are different teams, like they are DevOps, they are developers, they are working as a team. Developers needs to deploy their code, they need to test their code, and DevOps need to deploy their code on the production servers, and before that they need to test that. So as you all know, in IT market, if there is any solution, there is some problem. Okay, so in other words, we can say if there is a problem, then we need to configure, we need to find a minimal solution for that particular problem. Okay, I'll be delivering this session in English, Hindi, and Urdu both. If any one of you find any issue with understanding the topic, understanding the logic, you can ask me. I can deliver that particular thing in Urdu and Hindi as well. Okay. So, where was I? Okay. So initially there was a problem. Me being a developer, I want my code to run perfectly on every environment, like either it's on test environment, either it's on production environment. I need my code, I need my application to be perfectly running on every environment. Okay. So what I need every dependent library, I need every dependent package to that is dependent in my application. I need everything to be in my server as well. Okay, so initially, if we go back like 5 years or 6 years back, there was a problem. There was a major problem, and you can say there was a big fight between DevOps and developers. Developers usually say this particular code, this application, this feature is working on my machine, and the DevOps always says that there is some issue, there are bugs, there are different things that due to those things our application is not working. Okay, so the issue was because as I am a developer, I need to configure an environment. I need my application to run in a particular environment. And for that environment, I usually install different multiple packages. I install different libraries on my local environment to configure that environment so that I can build my own application. Okay. So once I complete my feature, once I complete my application, I push that code or I provide that code to someone to test that. But the issue is the environment on which they are going to test it. It won't have all those dependencies and all those required features to run my application. Okay, so the solution to this problem was Docker. Docker basically, what Docker facilitates us, or how Docker facilitates us in this problem, is basically Docker provides us a platform to develop, ship, and run our applications. Okay, so it basically provides us a shell in which we can deploy our application along with all the dependencies, along with all the dependent libraries, all the dependent packages, whatever you want. Okay, so it basically provides you a platform where you can test your application, where you can where you can deploy your application. So Docker basically enables you a separate infrastructure, so that in order to make your delivery kind of smooth and everything lenient, because the application, the feature, usually the developer always tries his best to deliver everything perfectly. Okay, so to deliver everything perfectly, it always require everything to be in that particular shell, or everything, every library, every package to be in that particular shell. Okay, so Docker provide us a facility, Docker provide us an environment, a platform where we can deploy our application along with all the dependencies, along with all the packages, so that it always facilitates us to you can say work smoothly along different teams. Okay, I'll for example,
I am a developer. I deliver my code. I deliver my application to another team, to DevOps team or to testing team. I provide a Docker image and I run that Docker image to a Docker container. So the DevOps team will be or the testing team will be testing my features on that particular container. They don't need any you can see other setup, any other thing or setting up their machine. The Docker container is already set up, and they don't even install. They don't even need to install anything else. Okay, so they're just gonna test it, and my if my Docker image or if that particular Docker image in which my application is there, it's working fine, then that particular image will be transferred or will be loaded to the production environment. Okay, so basically, Docker Docker follows a client server architecture, okay, where we have a Docker client, a Docker server, which is basically a nodemon, sorry, which is basically a daemon, and the registry is where we're gonna save or where from where we're gonna retrieve our images or our packages so that we can work with Docker. As you all know, that we have in last couple of years, there were different problems regarding, for example, if I am a developer and I need some heavy application, like for example, I need SQL server. Let's, for an example, I need an SQL server to be in my system, and I need to work on SQL server. It's like more like 900 MBs, or I think more than 1 GB to install on a system. So what to do if we need an SQL server on our local machine and we don't want to spare that particular amount of storage, and we don't want our storage to be full because of that. So what we're gonna do, we're gonna create an image. We're gonna pull latest image from MySQL GitHub, MySQL Docker GitHub repository, and we're gonna spin that image into our container, and boom, we'll be ready to work with MySQL. So it's that easy. Okay, so basically how Docker works, or Docker basically किस तरह से काम करता है. Docker client usually sends a REST API or a REST request to our Docker daemon, which basically is, you can say, is a server that usually manages all your containers, all your images, and everything, every process that needs to be done on images or containers. It's all in under the control of daemon. And then that particular image or that particular container will be, then if you need to push that image to registry, you can do that. If you need to retrieve any image from registry, like for the instance, if we go to Docker Hub, we can have multiple images there. If we go to like if we need a node latest image, we can download that. If we need MySQL image, we can easily download that. So this is a simple architecture to understand for beginner, for everyone, which is quite easy, because in couple of years there are different related solutions that we need to understand. Like for example, if I quote an example, like I am a developer and I need to understand how things gonna work as developer and how things gonna work as a DevOps, because जब तक आप एक डेवलपर हो, आपको साथ साथ ये भी आना चाहिए कि आपने अपने कोड को किस तरह से डिलीवर करना है. Like you should also know how to deliver your code, or how to deliver your code in a perfect manner, so that everyone can test it, or so that your code perfectly runs on every environment. Okay. तो लास्ट कुछ इयर्स में एक डेवलपर के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो अपने डेवऑप्स के स्किल्स या डॉकर के साथ एटलीस्ट वो खेलना जान जाए चीज़ों को, क्योंकि जब तक आप अपने कोड को, अपने अपने फीचर्स को आप अपने क्लाइंट तक नहीं पहुंचा सकोगे, जब तक आप उनको प्रॉपर से टेस्ट नहीं कर सकोगे, तब तक आप चीज़ों को फ्लुएंटली जो है ना डिलीवर नहीं कर सकते हैं. ठीक है.
सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक मैं समझता हूँ कि एसेंशियल चीज़ बनती जा रही है। एंड आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जो इसको एक प्लस पॉइंट कंसीडर करेंगी इफ अगर किसी भी एम्प्लॉय को डॉकर के बारे में एक अच्छी नॉलेज है तो, ठीक है। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने डॉकर में आज डिस्कस करनी है। डॉकर के इस सेशन में आज हमने डिस्कस करनी है, लेकिन मैं जो है स्टार्ट करूंगा बहुत ही बेसिक चीजों से, ताकि सबको चीजें आसानी से समझ आ जाएं। ओके, किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। एनीवन फ्रॉम यू, इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ इशू, you can ask me. I'm going to start with very basics, with you can say the units of Docker. Initially, we have images. As I have told you, image, what actually images? Okay, images are read-only template with instructions for creating a Docker container. Okay, image is basically a set of instructions, and with all those instructions, what we're gonna do, we're gonna need some base images. We're gonna run a Docker container so that our particular image or any image that we have retrieved from Docker Hub can easily be run in Docker container. Okay. Often an image is based on another image with some additional customization. Okay, so when we'll be creating our own image, I'll be showing you 2 or 3 different ways. Like for example, we'll be creating our own custom images, and we'll be using some base images. We'll be downloading those base images from Docker Hub, and then we're gonna use them. And there will be a few instructions will be using to create our own custom image. Okay, so okay, so next we have containers. Like I have told you, you need a Docker image to run to be run in a container. And what a container is basically a runnable instance of an image. uh, any image you have created from your Docker file can be run in a container, and that container will be responsible for running all of the code, everything that's currently residing in that particular image. Okay, so basically you can create, you can start, you can run, you can move container whenever you want. And behind this container, behind this images management, and behind this container management, there's always a daemon which is trying to handle things, and which is um, creating an environment where we can have images, and we can have multiple containers, multiple images, and everything that's working, and that's you usually see on Docker desktop. It's all being developed, or that particular environment is being developed by the Docker daemon. Okay, so as we just discussed Docker daemon. So what Docker daemon actually is? Docker daemon listens for Docker API requests and manage Docker objects such as images, containers, networks, and volumes. Okay, so Docker daemon basically listens the Docker API requests in order to manage your Docker objects, like your images, your containers, like your volumes. A Docker daemon can also communicate with other daemons to manage Docker services. Like, for example, if you want your Docker daemon to communicate some other Docker daemon in order to share some services, in order to manage some resources, you can also do that. Okay, so there's a difference. There's a difference between containers, Docker containers, and VMs. There's a question revolving around the IT market, and revolving around the beginners, those who are trying to understand, or who are trying to understand the Docker. The basic question is, like, we have VMs before Docker containers. Okay, then why we need Docker containers? Like, VMs are also providing us that particular functionality. So why we need Docker containers here? Okay, so there's a difference between Docker containers and VMs. Docker containers contain binaries, libraries, configurations along with the application itself. Okay, and the major difference between a Docker container and VM is that
Docker container will not have a guest OS, and it always relies on an OS kernel, which is basically provided to that, and which makes the Docker container lightweight. Okay. On the other hand, virtual machines has its own copy of operating system along with all the necessary binaries and everything other than the operating system that will make that VM more heavy, or you can say significantly larger than the containers. Okay, containers basically share the resources in between and allows you an OS level process isolation. On the other hand, the VMs basically provides you a hardware level process isolation, and they're usually slow in the booting process. Okay. Okay, so it's all between, it's all regarding an introduction to Docker. We'll be discussing about how we're gonna create our own custom images, and how we're gonna create our images, our appli and how we're gonna create an image from for our application and our particular functionality to be run or to be spin in a Docker container. So we're gonna discuss that in our next session. Okay. Okay. So any question till now? किसी को कुछ समझ ना आया हो, एंड किसी ने कुछ ऐसी चीज हो जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन उनकी माइंड में क्रिएट की हो रिगार्डिंग अभी इंट्रोडक्शन। ये मैंने बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, एंड आई ट्राइड इसको जितना बेसिक कर सकूं उतना मैं इसको बेसिक किया। ओके, सो इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ताकि हम लोग क्वेश्चन को साथ साथ आंसर करते हुए हम लोग आगे नेक्स्ट जल्दी से बढ़ें, क्योंकि वी हैव a lot more to discuss. We have different multiple instructions we need to discuss before creating a on or our first Docker file. Okay, so any questions from your side, so that we can start our next phase or next session, which is like building images. Okay, I'm waiting for your questions. Okay, meanwhile, I just try to join. Okay. Okay, yeah. Okay, what is okay? There's a question from Bilal. What is registry or Docker Hub? Okay, so basically, a Docker registry is a storage, or you can say a distributed systems for named images, or all the images that are available. And like for example, it's a local, it's a storage where you're gonna save your custom images, or you're gonna retrieve some images from. And like there are different multiple platforms, like for example Node, for example MySQL, for example SQL, for example any platform nowadays you're seeing has its own Docker image, and that particular Docker image is on some registry. And the most common registry that is currently being used for Docker images is Docker Hub. I think that's the answer to your question. Yeah. Okay. 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 Thank you very much, Bilal. I hope that's the answer to your question. So let's start our next phase. Like it's building images, and now we're gonna see how we can create our own image, and how we're gonna use Docker to create an environment in which our application or our code will be executed. Okay. So before directly diving into our Docker file, we need to understand how we can create a Docker file
how we're gonna use different instructions to perform different kind of tasks. Okay, so the agenda behind this phase or this section is uh, what basically a Docker file is. Okay, why we're gonna use a Docker file, and what purposes or how we're gonna write the Docker file. Okay, so next we have Docker instructions. Then we will be building our own image from Docker file, and then I'll be discussing about best practices to write the Docker file. And along with this theory part, we'll definitely have some activity so that we'll be more familiar about how to create a Docker file, or how we're gonna create an image from our own Docker file, and how we're gonna copy our code, our source code to an image, and that will be spin in a Docker container. Okay, so before starting anything, we need to understand what actually a Docker file is. Okay, a Docker file is basically a simple text document that contains multiple instructions, and all those instructions are responsible of performing different tasks according to their role or according to the use case. And all of those instructions are assembled in a single text document to create an image. That particular text image is basically known as Docker file. It's very easy to understand like how it's gonna work. I have an example on screen where we have created a Docker image for a project. For one of our project, it's like a very small project, so it's quite easy to understand this particular Docker file. So in this Dockerfile, we have a from instruction where we are having our base image. Then we have a workdir instruction in which we are setting up our working directory. Then we have a copy instruction, then a run instruction, and then we have another copy instruction, and a couple of instructions more. Okay, so by using this Docker file, you can easily create your own image. And by seeing this image, this example, I mean, like it's very easy to understand like how the Docker file is gonna be created and how our images will be created from this particular type of Docker file. Okay, so now it's time to understand more about like how many instructions we have. Like we're gonna discuss most of them. I have compiled some of the commonly used instructions in this slide, and we're gonna discuss that so that we can use them, and we can be more familiar how to use them, and in what use case or what scenarios these instructions or these commands can be used. Okay, so initially we have a from command, from instruction. The purpose of this from instruction is basically to create a new build stage for you and to set your base image for all the subsequent instructions. Like for example, you will be seeing or a Docker, or you can say an authenticated or a genuine Docker file will be starting from an from instruction where we'll be setting up a base image for that particular Docker image, or for that particular base. Okay, so what there's a question like I have asked, or I have asked different persons, like if I am delivering something and if there is something like you don't even understand, like I have used a term named base image. Okay, there wasn't any question from your side, like what is actually a base image. So a base image is actually, as the name describes itself, is a base for creating your own image, or it's a base like on which you will be creating on your custom image. There's always some before creating something, before creating a structure, you'll always need a base. Okay, that base will be containing different required aspects, or different required libraries, different required packages, so that you easily create a particular environment in which your application can easily perform its basic tasks. Okay, so
this by using from instruction, you can easily set your base image, and basically a from instruction starts a new build stage for you. The image can be a valid image once you use from instruction. I have mentioned this earlier, like a valid image or valid Docker file will be starting from a from instruction. Okay, so it's especially easy to start by pulling an image from the public repository. Yeah, it's very easy to understand how the base image is being set through from instruction, and how we're gonna use different multiple public repositories or public images to creating our own custom images. Okay, so we have different syntax styles of from, like we can use from with an image tag. We can use from with as, which is alias, and which is alias to builder stage, and then we can use from with the platform name alias and an image digest. Okay, so these are different formats of writing your from instruction. Then we have a run instruction. Okay, this is a quite important instruction. You need to understand like how it's gonna work, and it's one of those instructions that are most important to understand, because these type of instructions always create a layer, or there's a concept of layering in Dockerfile. I'll be elaborating that concept as well before starting the next instruction. Okay, so let's first understand what the run instruction actually is. Okay, the run instruction will execute any command in a new layer on the top of current image and commit the results. Okay, so basically, run command or run instruction usually creates a new layer on top of your Docker image. अगर इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में लेके जाएं, अगर आपके पास एक डॉकर इमेज है और आप डॉकर के अंदर जो है डॉकर फाइल के अंदर आप अपनी कस्टम इमेज बना रही हैं, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है लेयरिंग का, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कुछ कमांड ऐसी हैं, लाइक यू हैव रन, यू हैव कॉपी, यू हैव ऐड, these type of commands आपके पास बेसिकली एक नई लेयर क्रिएट कर देती हैं आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट के ऊपर, यानी कि इमेज के एग्जिस्टिंग स्टेट के ऊपर। और उस लेयर के अंदर काम होने के बाद जो भी आपने काम या जो भी आपने कमांड परफॉर्म करनी है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो आपकी उस इमेज की करंट स्टेट के अंदर पुश कर दिए जाते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च देयर लाइक 127 layer capacity, like 127 layers can be created, but the more number of layers you are creating, you can say it's increasing the size of your image. Like if you have multiple layers, then the size will definitely increase. You need to always try to be more careful while using such instructions that create a new layer, or that create a new state layer on your image. Okay, so we have two types of writing styles of run instruction. We have a shell form and exec form. There's a difference between these type of writing styles. Like shell form is basically a form where we are using an instruction without any scare brackets, and this type of writing style or this syntax style basically runs your instruction in your instruction as a child process of a shell. Okay, so if we are discussing about exec form is a type of writing syntax, like in a JSON manner. Like we have curly braces in our instruction. We have an executable as a first parameter, and then we have parameters for that executable. That executable can be anything, like for example, for the instance we take node as an executable, like npm as an executable, and then we have parameters like what we're gonna do with that particular executable. We're gonna start that, we're gonna test that, or we're gonna build that. Whatever we need, we can pass it in parameters. Okay, there are different use cases when we're gonna need different type of writing styles. Like there are certain use cases where we're gonna use the shell form, or there are certain instructions where they are more preferable to use shell form,
and there are different instructions where we'll be using exec form on the basis of their use cases. And according to the latest research, uh, the run instruction is most preferably being used with a shell form, like you're gonna be seeing this run instruction or any run instruction in this particular form. Okay, and the exact forms will be more preferably more preferably be used with CMD and CMD and entry point instructions. Okay, तो ये दोनों जो instructions हैं ये हम लोग अपने आगे आने वाले सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे. Okay, so run instruction basically क्या करती है? Run instruction helps you or facilitates you to install an application, compile and build your application, publish your application, and test your application. Okay, so as I have mentioned before starting my session, like this session will be more of kind of interactive session. So I have a couple of questions here. I'm gonna ask different questions regarding my instructions. I'm gonna ask some questions regarding what type of logic or what logic I'm explaining right now. Okay, so basically we have discussed a layering concept while discussing run instruction. So I have a question regarding that. Like I have two types of run instructions. First, I have run command with escape sequences, escape characters, and then on the second side, I have three different run commands. Any one of you, कोई भी मुझे बताना चाहे कि इनमें से कौन सा राइटिंग स्टाइल इट्स मोर प्रेफरेबल, एंड अगर इसको मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करूं या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों राइटिंग स्टाइल्स में से आपकी इमेज के बिल्ड साइज पर जो इफेक्ट करेगा ज्यादा वो कौन सा रहेगा? ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप इनमें से किस राइटिंग स्टाइल को ज्यादा प्रेफर करेंगे इन टर्म्स ऑफ, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बिल्ड का साइज रिड्यूस रखें. Okay, so we have first answer. I need all of you, जितने भी लोग हैं मेरे साथ, कोई भी रैंडम आप थॉट भी आप मुझे बताएंगे ना, तो मुझे समझ आएगी कि आपको चीजें किस हद तक समझ आना स्टार्ट हो चुकी है. ओके, तो इसी तरह से हम लोग अपनी पेस को कंटिन्यू रखेंगे एंड हम लोग जो है चीजों को अंडरस्टैंड करना इसी तरह से स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो उमर फराज आंसर्ड कि हमारे पास जो फर्स्ट राइटिंग स्टाइल है that's more preferable. We have another answer from Fazil, that's also first one. Bilal is also saying like first one. Okay, so I think more of them, more of the questions, more of the answers is basically first one. Okay, so actually the purpose behind this question was कि आपको लेयरिंग का कॉन्सेप्ट किस हद तक समझ आ चुका है. बिकॉज अगर आप एक प्रो बनना चाहते हैं, ये एक प्रो टिप है आपके लिए. अगर आप डॉकर फाइल्स को लिखने में एक प्रो बनना चाहते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज, लाइक हाउ टू मैनेज योर बिल्ड साइज. ओके, सो आपके पास जो पहला ऑप्शन है that's the more preferable scenario, that's the more preferable writing style of run command. because आपके पास जितनी, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो रन कमांड है वो जैसे ही एग्जीक्यूट होती है, या रन इंस्ट्रक्शन आपकी जैसे ही एग्जीक्यूट होती है, वो हमेशा एक न्यू लेयर क्रिएट करती है. ठीक है, और न्यू लेयर के क्रिएट करने पे वो अपना जो पर्टिकुलर उसने टास्क परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करने के बाद जो है उस जो टास्क से होने वाला रिजल्ट है उसको जो है पुश कर देती है आपकी रेपोजिटरी की स्टेट के अंदर, या आपकी इमेज की स्टेट के अंदर, सॉरी. ठीक है, तो अब होता क्या है कि आप जितने नंबर ऑफ रन स्टेटमेंट्स आप ज्यादा यूज करेंगे, उनसे आपकी बिल्ड का साइज इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, आपकी नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ते जाएंगे और ऑब्वियसली आपका बिल्ड का साइज बढ़ता जाएगा. अब ये जो स्केप करेक्टर्स हैं, ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? आप जैसे स्केप करेक्टर को इसको यूज करेंगे, तो ये बेसिकली एक सिंगल इंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन ये मल्टीपल लाइंस पे. ठीक है, इट्स अ सिंगल रन इंस्ट्रक्शन जो बेसिकली आपके पास एक ही लेयर क्रिएट करेगी, और एक ही लेयर के अंदर सारा काम करने के बाद आपकी उस जो एंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको पुश कर देगी, उनको कमिट कर देगी आपकी स्टेट इमेज की स्टेट के अंदर. ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूज केस ऐसा है कि you need to install, or you need to first download some APK from some website, and then you need
to install that APK, and after installing that application from that APK, you need to delete that downloaded APK. ये 3 टास्क हैं, ठीक है। और आपने ये 3 टास्क करने हैं। अगर हम लोग इसको पहले सिनेरियो के हिसाब से देखें तो पहले सिनेरियो में ये तीनों टास्क एक ही जो है लाइन के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। लाइक एक ही लेयर के अंदर ये तीनों टास्क हो रहे हैं, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपकी इमेज के स्टेट के अंदर पुश कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे फेज में देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो रन कमांड चलेगी वो क्या करेगी कि आपके पास आपकी जो एपीके है उसको डाउनलोड करेगी, ठीक है। सेकंड कमांड आपकी क्या करेगी कि जो डाउनलोडेड एपीके है उसको इंस्टॉल कर रही होगी, एंड जो थर्ड कमांड होगी वो आपके पास क्या कर रही होगी कि जो आपके पास इंस्टॉल्ड एपीके है उसको आपको आपकी लोकल रेपोजिटरी से या लोकल आपकी जो है डायरेक्टरी से उसको डिलीट कर रही होगी, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि काम वही हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ रही हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई होप मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा इसलिए एलेबोरेट किया क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव आवर CMD कमांड. Okay, so CMD command is used to set default command that gets executed once you run the Docker container. Okay, यहाँ पे बिफोर डिस्कसिंग दिस अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि लाइक वी हैव रन कमांड, वी हैव CMD कमांड, इनका ऑलमोस्ट जो काम है वो एक तरह का सिमिलर काम है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं? लाइक आप CMD इंस्ट्रक्शन को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हो रन कमांड से, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी ये एक इनका बहुत ही कॉमन और बेसिक इनका डिफरेंस है कि आपके पास जो आपकी रन इंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा आपके बिल्ड टाइम के लिए या बिल्ड जब आपकी इमेज की बिल्ड प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर वो रन इंस्ट्रक्शन यूज होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी CMD इंस्ट्रक्शन होती है, CMD इंस्ट्रक्शन बेसिकली आपकी जब आपका कंटेनर स्पिन हो जाता है तो उसके अंदर जो आपने अगर कोई कमांड रन करनी है उसके लिए आपकी CMD इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है। लाइक run is for your build process or build state, and the CMD is when your container is spinning. Okay, तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है। इसको थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं कि अब बेसिकली जो हमारी CMD इंस्ट्रक्शन है ये क्या करती है कि हमारे पास CMD और हमारी एंट्री पॉइंट की जो इंस्ट्रक्शन है ये काइंड ऑफ सिमिलर हमारे पास काम करती है कि हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल जो है क्रिएट करती हैं या एक ऐसी कमांड हमें जो है प्रोवाइड करती है कि जब आपका कंटेनर स्पिन करे या आपकी इमेज से आपका कंटेनर बने तो कंटेनर जैसे स्पिन हो तो आपकी सबसे पहली जो कमांड रन हो वो आप इस CMD के साथ लिख के आप भेज देते हैं, ठीक है। अब इस CMD इंस्ट्रक्शन को लिखने के भी हमारे पास डिफरेंट सिंटेक्स हैं या डिफरेंट इसके लिखने के फॉर्मेट्स हैं। लाइक आप इसमें एग्जैक्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मोर प्रेफर जो ज्यादा आपके जो प्रोज हैं या आपके जो आप ये समझ लें कि डॉकर के प्रो लोग जो हैं ये भी एक प्रो टिप है कि वो ज्यादा एग्जैक्ट फॉर्म को यूज करते हैं CMD के लिए, ठीक है। एंड इसको लिखने के लेकिन और भी तरीके हैं। आप एंट्री पॉइंट की तरह भी इसको लिख सकते हो, आप इसको शेल की तरह भी शेल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो कि CMD को यूज करते हुए हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास मल्टीपल CMD कमांड्स यूज हो रही हैं, मल्टीपल CMD इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही हैं आपके डॉकर फाइल के अंदर, एक सिंगल डॉकर फाइल के अंदर, तो जो आखिरी आपकी CMD इंस्ट्रक्शन होगी दैट विल बी एग्जीक्यूटेड और बाकी सब इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज हमेशा आपने याद रखनी है कि आपके पास जो मल्टीपल अगर आपके पास CMD इंस्ट्रक्शन है तो जो लास्ट वन होगी वही एग्जीक्यूट होगी आपके पास, ठीक है। ओके, तो जो हमने एक डिफरेंस हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले रन और CMD कमांड का, तो उसको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में निकाल के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारे पास जब भी एक रन इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म होती है तो वो बेसिकली हमारे एक बिल्ड प्रोसेस को शो करवा रही होती है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आपकी इमेज अभी बिल्डिंग स्टेज में है, ठीक है, यानी कि इमेज आपकी बिल्ड हो रही है। जो आपकी CMD इंस्ट्रक्शन है वो आपकी उस वक्त रन होती है जब आपके पास आपका कंटेनर एग्जीक्यूट होता है या लॉन्च होता है आपकी बिल्टेड इमेज से, ठीक है। अच्छा, आपकी डॉकर फाइल के अंदर मल्टीपल रन इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, लेकिन आपकी डॉकर फाइल के अंदर प्रेफर यही है कि CMD एक सिंगुलर यूज हो क्योंकि जो आखिरी CMD है वही आपके पास एग्जीक्यूट हो, ठीक है। Okay, next we have a
और कॉपी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन अभी तक के डिस्कशन में, अभी तक की इंस्ट्रक्शंस में कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आई नो थ्योरी पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा बोर हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, लेकिन आई आई वांट कि हम लोग इसको जल्दी जल्दी से कवर कर लें ताकि हम लोग डाइव इन करें, एक्चुअली हम लोग अपने डॉकर फाइल्स लिखना शुरू कर दें, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव अ कॉपी इंस्ट्रक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड हमें करना होगा। Okay, before starting this, Vikas is asking CMD, can you please explain again? Okay, so basically CMD, हमारे पास जो CMD इंस्ट्रक्शन है, दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। CMD इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमें क्या करता है कि हमें एक ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखने का मौका देता है, ये कि ये CMD इंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है, वो तब रन होती है जब आपके पास आपका कंटेनर स्पिन हो चुका होता है, ठीक है। यानी कि अब अभी जब हम लोग डॉकर फाइल अपनी बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी इमेज से जब आपका कंटेनर बिल्ड होता है, लाइक अभी हमारे पास नॉर्मली होता क्या है कि आप सबसे पहले एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हो, जिससे आपके पास जो है एक डॉकर इमेज बनती है, और उस डॉकर इमेज से आप एक कंटेनर बनाते हो। ओके, सो ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और एल्स। ओके, तो ठीक है। Okay, so I was discussing about a CMD instruction. A CMD instruction usually provides you a facility to write some instruction so that you can write any instruction that's gonna be run while your container is launching or while your container is spinning. The first instruction that will be executed will be the CMD instruction, and the important thing to understand for this CMD instruction is that we should use a single CMD instruction in our Docker file, because the Docker daemon will execute the last CMD instruction, and it will consider it as a final CMD, because a singular instruction needs to be run once the container is spin or once the container is launched from your built-in image. Okay. इसमें अभी कोई भी कंफ्यूजन है, इसमें अभी किसी भी किस्म की अगर कोई भी कंफ्यूजन है, जब हम लोग डॉकर इमेज को बना लेंगे तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से और हम लोग समझ लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आई हैव आवर कॉपी इंस्ट्रक्शन। So basically, it's also one of the most important instructions, and one of the most commonly used instructions. This instruction is basically used to copy uh, directories, copy files from your source directory to some destination directory, or you can say we have sometimes if you are familiar with Docker and if you are familiar with Dockerfile, we usually set our work directory. That's a relative path to our destination folder, destination where we need to copy the directories or copy the folders, copy the files from source to the destination. बेसिकली इसका मकसद क्या है कि आपके पास आपकी लोकल डायरेक्टरी से, आपकी लोकल मशीन से, every code on your local machine, you need to copy that code in an image. You will be using this copy instruction. Okay, the source will be representing the build context or the context in which your image is being developed. Like it's normally your local context, local system context, and the dest will be relative to your work directory or your image where you're gonna copy all of this code, and then you're gonna need different instructions to run your code in that particular environment. Okay, so we have the syntax for writing the copy instruction is like copy source and dist. That's very easy, or that's very easy instruction to use. Like you just need to define a source and a destination. The rest of thing will be covered by this copy instruction. Like it will be copying the source files or folders from your source directory to your destination directory, so that you can use all of that code in your image. Okay, so we have different examples also. All of this content I have compiled it from the official references from Docker, so you can easily go through all of those references to
easily understand these examples. Like I have an example like where I'm just copying files that starts with HOM, like three alphabets, to my destination directory, and then second example is like I am copying different files that have basically that its name basically includes four characters. The first three are HOM, and the final one can be anything. Like it can be like character. It can be an alphabet. It can be a numeric character. Anything. Okay, so it will be copied to our destination folder. Okay. Next, we have our add instruction. Before discussing add, initially, if we just go back when Docker was being introduced, initially with initial releases, we have our add instruction in Docker. We didn't had a copy instruction because the add instruction was there for copying your files, for copying your folders, for copying your local .tar files, for copying content from your URLs. There wasn't any need for any copy instructions. Okay, but with the passage of time, with some more releases like release one, we had copy instruction in Docker because while using add instructions, we have some use case scenarios where we need different only files, and we don't need any .tar file, we don't need any URL, we just need to copy some few files, and we just need and we don't need anything else. Okay, so that's when copy came into being and came into the scene, and then it's been used. But initially we had an add instruction. Basically the working of the add instruction and the copy instruction is quite same, quite similar, but the basic difference between these two is that like add instruction also provides you a functionality, or also provides you a feature to copy local .tar files or zip files and URL and content from your URL. That's something additional, additional feature or additional functionality that's add instruction is providing to you. Okay. So we have a difference between copy and add instructions. Like first, copy, as I've told you, like copy was added in like Docker version 1.0. It wasn't in the early releases. Add was present from the beginning. Like if we're going to discuss about the role, basically copy instruction duplicates the file and directories in a specified location in their existing format. Like you can use the copy instruction if you need to just copy some files or some directories. It will not copy any content from you, any URL. Like if you define any URL as a source, so that it won't copy anything from that particular URL. Okay. But on the other hand, add will facilitate you in this scenario. Like if you mention a URL as a source, it will definitely copy all of the content from that particular URL to your destination folder. Okay. So the instruction can be used only for local stored files. Yeah, copy instruction can be used for your local stored files. It won't be helpful for copying anything from your URL or anything that is like in .tar extension or zip files. Okay. So next instruction we have like environment instruction. As the name describes, most of us we are developers and we are familiar with you can say with a word or with a phrase named environment variables. So it's more of like that. Like environment instruction provides you a facility to create environment variables within the build context. Okay, so this environment instruction will be creating environment variables for all the subsequent instructions. Like if you have multiple instructions, you want an environment variable to be used in multiple instructions. So you just need to define an environment variable, and then you can use in
it in any subsequent instruction. But the thing is, or the important thing is, if any of the instruction is updating the value of your environment variable, the next subsequent instructions will be having that updated value. It won't be having the default value or the first value that was being assigned to that particular environment variable. Okay, so I have an example on right side. Like it's defining some environment variable, and we are using like four in our example in order to understand like multiple instructions can use environment variables, and like there are couple of instructions, there are multiple of instructions that can easily use environment variables. So uh, the format of writing environment instruction is very easy. Like you need to write ENV, and the key can be any identifier or any name you want your environment variable to be. Or then we have a value, any value, any type of value you need to save in your environment variable. Like in this example, we are saving slash bar backslash bar in R4, and that will be used all across the Docker file, and all the subsequent instructions will be using this particular environment variable. Okay, so I will be asking some question regarding this environment variable. Once we understand how it's gonna work, and like I have mentioned something, like if any instruction is updating your environment variable, the next substituting instruction will be having that particular upgraded or updated value. Okay. Okay, so these are some instructions that will be using environment variables. Like we have add instructions, copy, environment, expose, from, label user, volume, work directory, and on build. These are all instructions that are supported, or that can use environment variables easily. Okay. Okay, the question. But basically, we have, as I've told you earlier, like if we have an environment variable, and I need to update the value of an environment variable. So how things gonna work, and how that particular updated value will be transferred to the next subsequent instructions. Okay, so by seeing or by analyzing this example, I have an environment variable named ABC that has a value of hello, and then I have environment variable named ABC that's being assigned a value of by, and then DEF that's being assigned the value of ABC, and then I have an environment instruction or environment variable GHI where I am assigning ABC again. So the question is, what will be the value of DEF and GHI? Any of you? Okay, DEF and GHI. Okay, I have two answers, one from Hamza Sakhawat and Waqas. Both are saying both are saying bye, and I have Muhammad Qasim, like he's saying ABC. Okay, anyone of you? Anyone else? कोई इसमें ऐड करना चाहे, कोई मुझे और बताना चाहे? ओके ओके चलिए इसको जो है इसका इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं. सो द आंसर विल बी DEF will be having like hello, and GHI will be having bye. Now the basic thing that we forgot before analyzing this example was that I have mentioned something, like I have mentioned, if any instruction is updating or upgrading your environment variable, the upgraded or updated value will be used or will be accessible in the next subsequent instruction. Okay, so once I have updated the value of ABC in the second instruction,
that particular updated value will be used in the third instruction. Okay, so if I am assigning DEF ABC, then the DEF will be having a value of hello, because हमारे पास जो इफेक्ट होगा इसका वो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर होगा। ठीक है, इसमें जो है ये चीज बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इसको कॉमनली मिक्स कर जाते हैं इसको। ठीक है, तो किसी को कोई ना चीज ये समझ आई हो, एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस चीज में, इस कॉन्सेप्ट में? आई ट्राइड इसको एक बहुत ही इजी सी एग्जांपल के साथ इसको मैं आपको ना समझा सकूं। Okay, so let's move forward. I have a question from Zishan Fez. I'm confused regarding the layering concept, as we will be having multiple commands and each command will be creating a new layer on the top of other. Will the new layer be created with when previous command is completed, or all of these layers will be executed the commands parallelly? Okay, so basically, Zishan has asked me, like, if there are multiple commands in our Docker file, like what gonna be the execution sequence? Okay, either they all will be creating layers parallelly, or all layers will be executed one by one, and the values will be delivered or assigned one by one. Okay, so the answer to this is, actually, the Docker daemon reads the instructions sequentially as we have written in the Docker file, and some instructions like run, copy, and add are creating or will be creating layers on your current image state. Okay, so once, like for example, first I have run instruction, second I have add instruction, third I have copy instruction. So initially, when Docker daemon like arrives to first run instruction, it will create a new layer and it will perform the run instruction in that particular layer. And after the run instruction, that resulted value or the resulted data will be transferred to the current state of the image. Okay, and then that current state or stage of the image will be used in our next command or next instruction. Like next I have add instruction. That add instruction will then create a new layer and that layer will be the resulted value from that last run instruction state. Okay, so I hope you have got your answer, Zishan. Okay, so we have a difference between like we have another instruction named arg instruction. So there's a difference between arg and environment instruction. Both are like instruction. Both are instructions like these instructions are used to declare some variables that can be used in context. But the main difference behind this, or the main difference between these, are the context where they can be used. Okay, the environment instruction or env instruction, or the variables that can be that are declared by using env instruction, can be used in the containers. Okay, can only be used in the containers. It can't be used in the you can say Docker image. Okay, so any environment variable that is created from env instruction can only be used while running a container, or in a container running state. Okay, arg instruction, or the variables that are being created by arg can be used or will be used in Docker image, or the Docker build state. Okay, env instruction is mainly meant to provide default values for your future environment variables. As I've told you, arg values are not available after the build image is built. Like definitely, if anything that is dependent on the build state, it won't be accessible, or it won't be available after that build stage or anything. Like for example, if I have an image, if like I am creating an image, and while creating that particular image, I need some variables. So I will be using argument arg
instruction to create my variables, and these ARG instructions will have some additional functionalities too, like we can pass our build arguments or arguments from our CLI tool. Like we can easily write down hyphen hyphen build hyphen arg, and then the variable name, and then the assigned value, and this assigned value will be then transferred to the Docker file, and into that particular arg instruction where we are creating our variable. Okay, so then that value can be easily used in all the build context. Okay, so next we have like expose instructions. The expose instruction is one of the most easiest instructions. Like it's basically used to expose some port with a protocol on it, nothing else. Okay, so if we have written the syntax for writing the expose instruction is very easy. Like you can easily write expose port. If you just write down the port and you don't even mention the protocol, by default it will be using the TCP protocol, but you can also mention the protocol as well, like expose port number slash the protocol name, and that protocol will be used on this port. Okay, next we have a work directory, a work dir or work directory instruction. This instruction is basically used to set your working directory on which your next subsequent run command, run instruction, CMD instruction, or any other copy or add instructions can be used. Okay, so here I have a question, and before asking that question, I have a concept that's very important to understand. Like if we have multiple work directory instructions, how these instructions gonna work? Okay, like for example, I have three work directory instructions. First backslash a, then work directory b, then work directory c, and then run pwd, that will be returning our work directory. So what will be the answer, or what will be our current work directory? Okay. The hint in this question is that the work directory, the second work directory file, or the second work directory, or the second, you can say the directory, the second directory will be relative or reference to the first work directory instruction. The third work directory instruction will be reference to the second work directory instruction. So what will be the, you can say the result of this particular instruction? Okay. Okay, Zishan has answered me. PWD will be executed in C directory. Okay. Okay. So Abdullah. Okay. Okay, that's good. Okay. So okay. Okay. Okay, that's good. Most of you guys are getting confused. So let me explain this, or let me explain this question, or elaborate this question again, or let me explain the hint again. Like for example, we have multiple instructions, multiple parallel work directory instructions. Then the second work directory instruction will be referencing to the last work directory instruction. Okay, so like for example, I have a work directory instruction, work directory B. It will be referenced to work directory backslash A. Okay, so the answer, the accurate or the exact answer for this will be backslash A, backslash B, and backslash C. That will be the exact answer. Okay. Okay. So Abdullah Opal has answered me, and his answer was accurate. Thank you very much, Abdullah. Okay, so next we have our entry point instruction, and I think that okay, it's the last instruction. So it's like then we'll be creating our own Docker file, and we'll be creating our own image from that particular file. So we have an entry point instruction. What this instruction gonna do? An entry point instruction is used to specify the executable which should run when a container is started from Docker image.
Okay, it basically provides you an executable, or it basically works like a CMD instruction where you'll be explaining, or where you will be mentioning an executable along with some parameters. But the difference between the CMD instruction or the entry point instruction is that the entry point in the entry point instruction, you can add a CMD instruction in parallel. Like for example, if you need any CMD instruction along with entry point instruction, the entry point instruction can be written first and then the CMD instruction, so that you can have the arg variables or the build arg variables along with the entry point instructions, so that it will be easy for you to get variables from the CLI and to provide a build or to provide an instruction when the image is creating a container, or the container when the container is being launched from a particular image. Okay, so okay, so next we have like something I have mentioned in the very beginning. Like we will be creating a Docker file, and from that Docker file we'll be building our image, and from that particular image we'll be running our Docker container. Okay, okay, okay. So let's just dive into like how we're gonna create a Docker file, and then we will be discussing like how to copy things from your local files and into your image. And let me just at my terminal. Okay, container Docker workshop. Okay, okay, it's already existing. So like okay, work, and then cd Docker work, code, and your code. Okay, so like okay, so we have our VS code open now, right now, and what we're gonna do, we're gonna write some code, and then we're gonna deploy that code, or create an image from that particular code, and then we're gonna create our own container, first Docker container, and everything gonna be very simple and from very basic perspective, so that they can anyone can easily understand, either he or she is a developer or a DevOps, or anyone that is like a newbie or new person or a beginner, to understand what a Docker file actually is. Okay, so like for example, I just create app.js, and here I just write a very basic command like hello from Docker. Okay, so I have my app.js file, and I need my Docker image to have this file in it, and then I want my container to print this in my Docker container console, or in my console. Okay, so now I'm gonna create my Docker file. It's easy to write one. Okay, okay. Okay, so okay, so when we were discussing about the instructions, so the very first instruction that we're gonna be using is a from instruction. Okay, so one thing to be mentioned, like it's Dockerfile isn't a case sensitive file, but the most preferable writing style is to write all the instruction names in capitals, so that like it looks good, and we can say
it looks more professional. Okay, so from, like for example, I use an Alpine as a base image. Okay, so this is like a base image. What I will be requiring to create my own Docker image. Okay, so I am using an Alpine version. What is an Alpine? You have basically seen multiple doc. If you are familiar with Docker files, or if in future you're gonna see multiple developers using Alpine versions of some particular framework, or some particular image of some framework. Like for example, if you are a Node developer, you're gonna be seeing different developers using Alpine versions of Node image. So basically, the Alpine version, what actually is an Alpine, it is basically a distributed distribution of Linux, that is basically a very small and slime base image. Like it's like 5 MB of size. So that like if you are using any base image with you can say um, large size, obviously your image size will be increased. So using your base images, the decision behind using your base images should be very carefully, it should be taken very carefully, so that you won't be increasing your image size, and you won't be creating your image to be of size something like 400 MBs or like 600 MBs. ओके, सो अभी इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक अल्पाइन को एक बेस इमेज रख रहे हैं, और मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम अल्पाइन मैंने अल्पाइन से मैंने अल्पाइन की एक बेस इमेज ले ली, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अभी इनिशियली एक चीज लिख रहा हूँ जो जो कि अभी मैं आगे इन फ्यूचर में इसको यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको कहा ये एक बिल्ड है, बिल्ड स्टेज है मेरे लिए। ओके, इसको अभी आप लोगों ने इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के समझाऊंगा, ठीक है। ओके, फ्रॉम एन अल्पाइन वर्जन, like I have got my base image. Now what I need to do, like I have to copy my files from my local source to my destination folder. Okay, so from my local source, once I click like dot, it will be representing my source, and then I'll then if I add some space and then dot, it will be representing my desk folder. Okay, desk location or desk folder. So before this, I have to mention my work directory as well. Like for example, I am using a node, or I'm copying something like I'm working with Node, so I'm just writing my desk folder to be like root slash a app. Okay, so I am copying my app.js file to this particular destination folder. Okay, so the next thing, okay, so like CMD and like executable node, let's write node as an executable, and I want node to run my app.js. Okay, so any of you, any question, अभी तक कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो इन चार इंस्ट्रक्शंस के अंदर, या अभी जो मैंने जितना भी मैंने लिखा है इसके अंदर, कोई भी किसी किस्म की किसी को कंफ्यूजन हो? एनी कंफ्यूजन? ओके ओके, आई थिंक ये सबको समझ आ गई, इतनी सबको समझ आ गई है, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक बेसिक अपनी एक इमेज इससे बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं कि हमारी इमेज जो है एक इमेज बनेगी कैसे, और इमेज का साइज क्या होगा, और देन हम लोग उस इमेज से अपना एक जो है ना वो कंटेनर बनाते हैं। ओके, सो बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक दिस,
आई वांट कि मतलब सबके पास डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड है कि नहीं, मुझे ये सब जो है काइंडली मुझे बता दें, क्योंकि हम लोग इसमें साथ साथ काम कर रहे होंगे। ओके, इट इज इंस्टॉल्ड। ओके, आई हैव, ओके, okay, is there anyone who haven't installed Docker desktop yet? Anyone? Okay, Docker and Helm installed. Okay, that's great. Okay, बिलाल, बिलाल बेसिकली हमारे सेशन की एक प्री रिक्विजिट्स में से एक था कि आपने डॉकर इंस्टॉल करना था। सो बेसिकली हम लोग ताकि साथ साथ, क्योंकि वर्कशॉप है तो वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि हम लोग साथ साथ इसके काम करेंगे, तो जो है आई थिंक आपको वो कर लेनी चाहिए। ठीक है, आप इसके पैरेलली करें जल्दी जल्दी से, ताकि हम लोग फिर ये कंप्लीट इसको करके और जो है हम लोग आगे नेक्स्ट मूव करें। ठीक है, ओके, चलो। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इससे अपनी एक इमेज बनाते हैं, डॉकर बिल्ड। इट्स अ कमांड जिससे आप अपनी डॉकर इमेज बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डॉकर डॉकर बिल्ड हाइफन टी, और हमारा जो टैग नेम होगा, लाइक मैं कहता हूँ कि इसको मैं इमेज का कह देता हूँ, नोड ऐप कह देता हूँ इसको मैं। ठीक है, इसको डॉट से, यानी कि डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है आपके करंट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, अब मैं अगर इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास मेरी इमेज को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं आपको अपना डॉकर दिखाऊं, डॉकर डेस्कटॉप दिखाऊं, तो मेरी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, बट अभी क्या है सॉरी, अभी क्या है कि अभी हमने इस डॉकर इमेज को कहीं पे यूज नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हैं, अभी ये अनयूज के स्टेटस के साथ यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि उनको कुछ एरर आ रहा है, तो वो एरर आप जो है यहाँ पे मैसेजेस में या चैट में आप शेयर करें, ताकि फिर उसको देख के मैं आपको बता सकूं कि उसका फिक्स क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, तो अभी हमने इमेज बना ली है। ठीक है, एक वेरी बेसिक हमने इमेज बना ली है, और अगर आप इमेज का साइज देखें तो इमेज का साइज हमारे पास क्या है, 7.05 MB राइट नाउ। ओके, ये इतना इतना साइज, इतना कम साइज क्यों है, क्योंकि वी हैव यूज्ड अ वेरी बेसिक और वेरी बेस लेवल, और बेस लेवल की स्मॉल स्लाइम बेस इमेज को हमने यूज किया है, जो अल्पाइन की इमेज है। ठीक है, लाइक उसका अपना साइज ही ऑलमोस्ट लाइक 5 MB है। ठीक है, तो बिल्ड साइज इसका इसलिए रिड्यूस है। अगर आप इसी इसके अलावा, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप नोड की कोई लेटेस्ट वर्जन, नोड का लेटेस्ट इमेज लेटेस्ट टैग के साथ आप उठा लें, या नोड की अल्पाइन टैग ही आप उठा लें, तो आप उसका अल्पाइन वर्जन भी देखेंगे कि वो भी अच्छा भला या जो है काफी ज्यादा उसके एमबीज होंगे, और उसका साइज काफी बड़ा होगा। ठीक है, ओके, सो अभी हमने अपनी एक इमेज बना ली है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी से अपना जो है एक कंटेनर इस इमेज से स्पिन करता हूँ। ठीक है, ओके, मैं डीमन को करता हूँ इंटीग्रेट, एंड मैं क्या करता हूँ, अ, मैं कहता हूँ कि मैंने, मेरे पास जो मेरा नेम होगा कंटेनर का, उसको मैं कह देता हूँ कि नॉट कंटेनर। ओके, नोट कंटेनर, और इसके बाद मैं अपनी इमेज का नेम दे देता हूँ, लाइक इट्स नोड ऐप। ओके, ओके, enable to start exec node। ओके, ओके, सो अभी बड़ी एक मजे की चीज हुई है हमारे साथ। ठीक है, मुझे आप लोगों ने बताना है, ये वो चीज है जो कि मैं भी थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहा था, कि आपने जब भी बेस इमेजेस यूज करनी है, आपने बेस इमेजेस को बड़े ख्याल से और बड़े एहतियात से यूज करना है। बिकॉज होता ये है कि जब आप बेस इमेजेस को यूज करते हैं, तो बेस इमेजेस क्या होती हैं कि आपकी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको कुछ पैकेजेस या कुछ
लाइब्रेरीज की सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने जो है अल्पाइन की एक बेस इमेज को यूज किया, और मैंने क्या किया, मैं सीएमडी जो मेरी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर मैं यूज एग्जीक्यूटेबल कर रहा हूँ नोड का, ठीक है। हुआ क्या कि नोड जो है उसको अल्पाइन की इस बेस इमेज में से नहीं मिला, ठीक है। तो इस वजह से उसने मुझे कंटेनर को रन करते हुए बता दिया कि भाई अभी आपके पास नोड इंस्टॉल्ड ही नहीं है, लाइक यू डोंट हैव नोड इंस्टॉल्ड येट। ओके, तो इसके लिए अब इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं कि हम लोग अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी जो इमेज है, इसको इसको डिलीट करते हैं। लाइक हमारे पास अगर हमारा नोड कंटेनर भी बन चुका है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नोड इमेज अगर हमारी बन गई है, इसको भी फॉर द टाइम बिंग इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो बेस इमेज है, हम लोग इसकी बेस इमेज को रखते हैं नोड, इसका हम लोग टैग यूज कर लेते हैं लाइक मेरे पास क्योंकि अभी करंटली नोट 16 इंस्टॉल्ड है। और अच्छा, ये जो वर्जन होता है, ये आपने जो बेस इमेज का आपने वर्जन सेलेक्ट करना है, ये आपने बहुत ही एहतियात से यूज करना है, बिकॉज आपके पास आपने यहाँ पे वो वर्जन यूज करना है जो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को चाहिए, ठीक है। या वो वर्जन जो आपकी लोकल डेव एनवायरनमेंट पे है, जिसपे आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली रन कर रही है, ठीक है। तो मेरे पास अभी करंटली नोड का 16 वर्जन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं नोड का करंटली 16 वर्जन पे ही जो है उसी की इमेज को यूज करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे उसकी अल्पाइन इमेज चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं 16 इसका लेटेस्ट वर्जन लूंगा, नोड का लेटेस्ट वर्जन लूंगा, तो वो मेरे पास 19 होगा, 19 की बेस इमेज आएगी जो कि बहुत हैवी इमेज होगी मेरे पास। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे उसकी अल्पाइन वर्जन चाहिए, ठीक है। तो अल्पाइन इमेज उसकी हमने नोड की अल्पाइन इमेज ली, जिसके अंदर मुझे नोड की फैसिलिटीज या फंक्शनैलिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सी इमेज को क्रिएट कर लेते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, यही कमांड दोबारा यूज करता हूँ, नोड ऐप इसको बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आप ये देख सकते हैं। अच्छा, उसने क्या किया है कि ओके, ठीक है, उसने हमारी एक नई इमेज बना के हमें दे दी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस इमेज से कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने पास अपना जो है कंटेनर को स्पिन कर सकूं, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखना है कि क्या होता है इसके साथ। अभी भी मेरे पास एक एरर आया हुआ है। कोई आप लोगों में से मुझे बता सकता है कि एरर क्यों आया? एनीवन? मुझे एक रैंडम थॉट ही दें जल्दी जल्दी से, ताकि हम लोग इसको, इस एरर को भी जल्दी से साथ साथ फिक्स करके हम लोग जो है ब्रेक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताएं। एनीवन, मुझे रैंडम थॉट्स ही चाहिए, क्योंकि आप जितना कोलैबोरेट करेंगे आपको चीजें उतनी इजीली आप अंडरस्टैंड उसको कर सकेंगे, ठीक है। ओके, हमजा सेड सॉरी नो आइडिया। ओके, इट्स ओके हमजा, इट्स ओके। एनीवन एल्स? नोड नॉट फाउंड, स्टार्ट द डॉकर सर्विस। ओके, env। ओके, एनीवन एल्स? ओके, ओके, आप लोग जितने भी लोगों को जो भी आइडियाज आ रहे हैं, मुझे सबके सबका मुझे रिप्लाई चाहिए, ठीक है, इस चीज पे। व्हाट बिल्ड कमांड डिड यू यूज? ओके। अच्छा, एक ना मैंने जानबूझ के एक चीज मैंने छोड़ी, ताकि मैं देखूं कि आप लोग उस पे क्या करते हो, ठीक है। अगर आप देखें तो मैंने इस करंट इमेज को
इस करंट डॉकर फाइल को सेव ही नहीं किया अपने अपडेटेड चेंजेस के साथ। ठीक है, मैंने जब आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जब मैं यहाँ पे मूव कर रहा था, तो मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि इट स्टिल गॉट द अल्पाइन लेटेस्ट वर्जन, या उसने जो इमेज गेट की, वो जो उसने मेटा डाटा लोड किया, वो उसने अल्पाइन की लेटेस्ट इमेज का मेटा डाटा लोड किया। ठीक है, आप इसको सेव करें। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको दोबारा से हम लोग चेक करते हैं। ये चीज, ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि जब आपने डॉकर के साथ जब वर्क करना है, या डॉकर की आप डॉकर फाइल लिख रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके लिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ओके, ये देखिए, दिस इज द डिफरेंस आई वांटेड कि आप सब नोटिस करें। ठीक है, पहले क्या था कि पहले स्टिल उसने अल्पाइन की लेटेस्ट वर्जन, अल्पाइन की लेटेस्ट इमेज उसने ली। अब उसने क्या किया है, उसने नोट 16 की अल्पाइन वर्जन की जो है बेस इमेज ली है। और अगर मैं आपको अब इमेज का साइज दिखाऊं, तो यू कैन सी कि मैंने नोड की अभी सिर्फ बेस इमेज गेट की है और उससे अपनी इमेज बनाई है। तो मेरे पास उसका जो साइज है, मेरी ओवरऑल इमेज जिसके अंदर सिर्फ मेरी एक ऐप डॉट जेएस पड़ी हुई है, उसका जो साइज है वो मेरे पास 117.68 MB पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि आपकी जो आपकी बेस इमेज का साइज है, वो भी किस तरह से आपकी इमेज के साइज पर अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास हमारी इमेज सक्सेसफुली बन गई है। अब हम करते ये हैं कि हम जो है दोबारा से इस इमेज से अपना कंटेनर रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास कोई एरर नहीं आया है। ठीक है, मैं अगर जो है, अगर आपको मैं डॉकर ही अपना खोल के दिखाऊं, तो कंटेनर्स में मेरे पास मेरा नोड कंटेनर रन हुआ, रन होके एग्जिट हो गया। अगर मैं नोड कंटेनर का लॉग खोलूं, तो यू कैन सी कि मेरे पास मेरी जो app डॉट जेएस की फाइल थी, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई, और उसने मुझे जो है कंसोल लॉग करवा के उसने मुझे दिखा दिया। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने वर्स्ट केस सिनेरियोज भी कुछ देखे वाइल राइटिंग डॉकर फाइल्स, कुछ बेसिक मिस्टेक्स देखी वाइल राइटिंग डॉकर फाइल्स, और कुछ हमने देखा कि बेस इमेजेस किस तरह से इफेक्ट करती हैं। और अभी हमने अभी बहुत ही बेसिक लेवल की एक इमेज और उससे कंटेनर बना के हमने देख लिया। ठीक है, तो हम लोग ब्रेक के बाद जो है कोशिश ये करेंगे कि अब, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका साइज आप देखें कि मेरे पास 117.68 MB सिर्फ और सिर्फ एक ऐप डॉट जेएस का। ठीक है, नाउ आई वांट कि इस ऐप इस इमेज का साइज जो है वो मैक्सिमम लेवल तक रिड्यूस हो, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ था ही नहीं। ये तो अभी खाली सिर्फ एक ऐप डॉट जेएस फाइल है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा पूरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे नोड मॉड्यूल्स भी हैं, ठीक है, मैं फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मेरा प्रोजेक्ट है जिसकी ओवरऑल उसकी जो साइज है वो खुद ही इतना बड़ा है, तो वो तो इस तरह से तो मेरी इमेज का साइज ही बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आगे फ्यूचर में चल के मेरे लिए मसले क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक बेस्ट प्रैक्टिस देखेंगे जिसका नाम है जिसको बेसिकली हम लोग जो है डॉकर यूजर्स जो हैं वो इसको मल्टी स्टेजिंग से जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मल्टी स्टेजिंग की एक बेस्ट प्रैक्टिस यूज करते हुए साइज को रिड्यूस करेंगे। लेकिन आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप इसको प्रैक्टिस करें। अभी तक जितना हमने किया है, हमने बेसिकली एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, जो एक नोड की एक एप्लीकेशन थी छोटी सी, एक नोड की भी नहीं बल्कि इसको मैं वेनिला जेएस कहूंगा। वेनिला जेएस के अंदर एक छोटी सी एप्लीकेशन मैंने लिखी, उसको मैंने डॉकर फाइल के थ्रू उसकी इमेज बनाई और उससे मैंने अपना कंटेनर को स्पिन कर दिया। ठीक है, आई वांट कि जब हम ब्रेक से वापस आए तो मेरे पास इस चैट के अंदर जो है सबके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हों डॉकर डेस्कटॉप के, कि जिसके अंदर उन्होंने ये इमेज बनाई हुई हो और इमेज के साथ उन्होंने कंटेनर को स्पिन किया वो। ठीक है, आई वांट ये सब के सब जो है करके बैठे हुए हैं। अच्छा, चैट में कह रहे हैं कि वकास, कैन यू प्लीज पोस्ट कमेंट्स इन चैट और सम प्लेस, सर कमांड्स भी शेयर कर दें। ओके, श्योर। अच्छा, अभी ये बेसिक कमांड्स हैं तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इन कमांड्स को खुद से एक्सप्लोर भी करें, उनको खुद से लिखें भी, या डिफरेंट तरीके से भी इसको काम को करने की कोशिश करें। ठीक है,
मेरे पास कुछ चीजें हैं, उसको हम लोग देख लें एंड पे। ओके, इसको कर लें, ठीक है। Okay, so we have discussed like how to create an image from our Docker file, and like how we can launch a container from our Docker image. Now we're going to discuss about the best practices, like what are the best practices of writing Docker file, or writing a Docker image, like how we can create a Docker image like a pro. These are some basic best practices. Like if you have a project, if you have a front end project, or if you have a project like which has multiple files, and there are different files that you don't even want to add those files into the build or into the image, so you can use docker ignore. That will facilitate you like to ignore all those files that are mentioned in this particular file, uh, to be excluded from the files to be copied on a test folder. Okay, so docker ignore file is, I think, should be mandatory while using Docker or while creating your own image. Multi-stage builds, it's a very important topic. Like you can create, if you see, in a last example, we have an image created, like its size was 117 MBs. We can reduce its size by using multi-stage builds. What is the concept of multi-stage builds? Basically, we create different stages for builds and use multiple builds, and use context from last builds. This will automatically reduce the size of your particular image, as we will be like building our code and then using the builded code or builded context. So that will automatically reduce our build size. Okay. The next is never ever install unnecessary packages into your image. As we know that obviously, if we're gonna install anything unnecessary or anything that is not even useful for you, it will definitely increase the build size of your image. As I have mentioned you earlier, like you can use Alpine versions if you don't have any complexity or complex dependency structure in your software. Like if you have a software application in which there's a complex application architecture, complex dependency architecture, in which you will need multiple dependencies in your local environment, so you will definitely go to the official base images. Okay, you won't be using any Alpine version, because in Alpine versions of that particular base images, there are some basic libraries or basic packages, which can be used for simple tasks. Okay, so you can use the Alpine versions for such complex dependency dependent architectures or applications. Okay, so decouple applications, yeah, obviously, it's a concept where you simple decouple your applications, like a singular container should perform or should be hosting a singular application. Okay, so the next one is minimizing the number of layers. Yes, as we have discussed earlier, then the more the number of layers, the more will be the build size. The less the number of layers, the less will be the build size. Um, the second last one will be sort multi-line arguments. Yes, we have to use like escape characters to run instructions like run, copy, and add. That will add an additional layer on your build context. Then last one is leverage build cache. That's a very important thing, because Docker basically cache different multiple cache while performing different multiple instructions. Like for example, if I have required, or if I have got some base image from a Docker Hub repository, Docker daemon will automatically cache that particular image, and that cache will be definitely being used in, if we create a new image from that particular repository, that cache can be used, so that to reduce the time being spent on creating images and requiring all the metadata from Docker Hub.
Okay. So I have added different links, or these are all links that I have found while researching on Docker and while creating my own series of you can say demos on Docker. So you can go through all of these links. Some of these are official reference Docker files, and some of these are like different official platforms explaining how Docker is useful, how multiple features, how different things gonna work in Docker. So uh, this is all from my side. Any question you can ask me so that we can conclude this session, and we can invite our next host to explain the next topic or to start the next session. Any questions for me? Hello, can you hear me? Okay, okay. Okay, good. Hamza just texted, I have created the image, but I think container is not created. How can I run command without container name? Okay, Hamza, you don't need to specifically write the name. I have written the name because I want you to easily understand. Like for example, if I create a Docker container without any name, it will assign the container title or container name to a random generated ID. Okay, so it will be difficult for you to understand which container is used for your current image. So I have named it in order to understand, like, yeah, this is our working container for our working image. Okay, so you can use the run container command without the Docker name, Docker container name. Okay, successfully created the image, but the container is not available in the list. Okay, container will be available in the containers list. You have to run a container. You have to spin a container. You have to launch a container from your image by using Docker run. Okay. Okay. So I think there's no more questions. So thank you very much, guys. This is all from my side. You can communicate with me. You can contact me. You can ask any questions. You can easily ask any questions from me. You can have my links, my communication links from different posts. So thank you very much. We'll meet next time, inshallah.